So basically what I realized was that unless we know these charts, okay, so there are basically 4, 5, 6 charts, which now we have made it into 3 charts. So unless we know these 3 charts more or less by heart, you know, grasping what the other person is saying or whatever we are researching on will become very difficult. Okay, so that is why this morning when I started doing some sort of R&D work, and I've come up with some sort of a thought process, let us say, which helps us to get these 4 things in place. 4 is what the Uch, Neech, Pakka and Rashi. ये जो बहुती है ना, so that I've considered as one chart. Instead of 4, I've made it, I've considered as one chart which we need to buy heart. The second thing which we need to buy heart is the Masnui ka combination, because that also comes into play. And the third one is the basically enemy and friend wala thing. Okay, so today I spent the time in sort of getting a picture, let us say, of this 4th thing, Uch, Neech, Pakka and Rashi. So which I'll share with you all. And why why I was in a hurry and why I called it today is, then you can spend the next 1 week getting that. So next time when you do, we'll be in a better position. In a couple of days, I'll work on the friendship to enmity thing, that also I will share. Okay. So, Acha, by the way, this is not an unlimited thing. So 45 minutes it might cut off, log back into the same thing with that 111 password. Huh? Okay. So now what I'm doing is I'm sharing the screen. Okay. Can all of you see the thing? So morning what I sent on the group is this. Okay. And Yes. now I'll explain to you how the thing goes. Now, before I start this also, what I want to tell you is, I have done it in 2 ways. One is whatever the, the karak tattva of that position is. Like for example, sun in first house is the atma karak, is yourself, is the rising, this thing because you're born there. So sun is understandable. Many times it might not be pertaining to that, but it will help you to understand it. Okay, so whatever picture I weave in front of you, just try to imagine it and try to sort of lock it in your head, so that pictorial thing will be better. Huh? So chalo, let's start. So now, at the moment, what we are going to do is, we are going to look at this. What I mean by that is the uch neech ka thing just now. First, we look at it. This component we are all pakka about, barabar? Because that is our Rashi thing. So if you know 1 and 8, 1 Mars 8, correct? 2 Mars 7. याद है ना? I'll understand what I'm saying. 3 Mercury 6, 4 Sun, 5 Moon. अरे उल्टा बोला, sorry. 4 Moon, 5 Sun, 4 Moon, 5 Sun, correct? 9 and 12 Jupiter, and ये वाला 10 and 11 Saturn. तो ये right hand side का अपने को तो by heart है. That is not a problem. Okay. Now what we'll be concentrating is this axis at the moment, the north-south, the uch and the neech. Okay. So how it goes, I'll tell you. Basically, first house is, let us say, it is the highest point. It is your atma. Okay. So obviously, sun, sun, highest point, first house का उच्च, highest point, इसलिए ध्यान में रखो sun. अगर सन ऊपर है तो नीचे कौन बैठा है? Who sat down? तो Saturn sat down. Sun is up in the sky. Who's sitting down? Saturn. एक ध्यान में रखो, like I told you last time, इसका बराबर mirror image होता है. So basically, if you look at this as a mirror line, your Saturn will come here and your Sun will come here. Are you understanding what I'm saying? Basically, what I mean is, if you consider this as a mirror line, this is getting mirrored here, this is getting mirrored here. Correct? So always everything will be a mirror. You'll understand in 2 minutes. So Sun is rising up, so Saturn is sat down. Now there are 2 ways in which you can consider this as moon. One is that Sun and Moon together. They are actually out of the 9 planets, Sun and Moon. Just give me 1 minute. Huh? हाँ बाबू पूछ लो. ओके मी करतो जस्ट क्लासमध्ये झालं की तुला फोन करतो. बाय बाय येऊन घे. So one way you can look at it is sun and moon.
are actually the gods which we can see, because other planets we cannot see with our eyes. So you can look at it that way. Or second way you can look at it is sun is where the person is born. Second house is a house of food. The first thing that the child food is milk. Milk is mother. Milk is moon. So moon you can consider here. Okay. अभी ये house में, because it is the start of life, there is nothing niche. Everything is nice. So it is, there is nothing niche. Moon is exalted, nothing is debilitated. अभी इसका बराबर opposite इधर आता है. Eighth house is the house of death. So nothing is exalted. Okay, beyond death, nothing is beyond death. Okay, and moon gets debilitated. Okay, so this is how the basic first these two houses are working. Now, if we come to the third house, okay, I wanted to understand one simple thing. ये अपना एक square है, बराबर box है. It is standing properly. Now I am drawing a box. Just see if you can understand what I am doing. Within error of this box, यही बॉक्स को मैंने टिल्ट किया है, यानी जो भी सीधा है उसको टेढ़ा कर दिया, जो भी अच्छा चल रहा है उसको टेढ़ा कर दिया. ये किसका काम है? राहु केतु का. एनीथिंग दैट इज गोइंग स्ट्रेट उसको प्रॉब्लम में लाना राहु केतु का काम है. सो दीज हाउसेस, जस्ट आई विल एक्सप्लेन इन 1 minute. सो दिस हाउस, this house, this house, and this house has got Rahu Ketu in a specific combination. I'll tell you as Ucha Neech. Teda kar diya house. Barabar? So see, if you had done it here, what I'm going to do that this couldn't have been like Teda. Isko Teda nahi ho sakta hai. So third house ka Teda. Okay. So iska Uch Neech ka kaise ye hai, I'll just tell you. ये और ये हाउस राहु केतु है. नेक्स्ट इज केतु राहु. ओके, लुक एट इट लाइक अ रिदम. राहु केतु केतु राहु. ओके, नॉर्मली अपन राहु केतु ही बोलते हैं ना, केतु राहु नहीं बोलते. सो पहला इधर राहु केतु, सेकंड वन इज आल्सो राहु केतु, देन मिरर इमेज हो गया केतु राहु. ओके, सो बेसिकली हियर उच इज राहु, नीच is Ketu. Same thing like I said will repeat here, Uch Neech. Okay. This sequence becomes exactly opposite over here. Either Ketu Uch ka ho gaya, either Rahu Neech ka ho gaya. You can compare it with what I have shown you earlier also. Okay. और ये वापस 12वें घर में ऐसे हो गया. So if you can understand what I've done, Rahu Ketu, Ketu Rahu. समझा? So it is that tilted square जो नॉर्मल जो अच्छा चल रहा है उसको टेढ़ा करने का काम राहु केतु का है. तो ऐसे ध्यान में रखो. Okay. Now coming to this house. This is a house of luxury. Okay. What is the height of luxury? Gold. Barabar? Gold is represented by Jupiter. So gold is exalted in 4th house. That is your gold. Okay. Gold. Now this is the way I have put it. Okay. Gold खोदने के लिए आदमी मरता है. You know, in very crude कि पैसे के पीछे, लालच के पीछे, गोल्ड के पीछे आदमी मरता है यानी goes down, नीच. What is मरता है? MAR is मरता है, Mars. Okay. 4th house is house of luxuries. इतना ध्यान में रखो. Luxury का height is gold. So gold is Jupiter like I told you yesterday. So gold is उच्च. गोल्ड के पीछे आदमी मरता है, तो Mars. Okay. Like I said earlier, this is barabar opposite. Mars comes here, Jupiter comes here. Okay. Now we come to 5th house. Okay. 5th house is the house of your children, and barabar uska opposite agar pakade to 11th house is your ichha purti, the best possible houses in your chart. So nothing is which, nothing is neat.
भूल जाओ. Okay, so this basically what we are trying to say is nothing is uch, nothing is neat. Sorry. Understanding so far? This is the house of children. This is the house of desire fulfillment. Two best houses. So why have some good or bad over there? So everything is just forget about it. So uch neech udhar ho gaya. Okay. Now coming to this house. इधर जरा थोड़ा सा ध्यान दे दो because it's slightly complicated but you will understand. This house is the house of marriage. You remember from KP, seventh house. And if you remember, the house before it is the 12th house, is the negating house. So ये इधर negate होगा. Okay. Let's look at it from a gent's point of view. Wife is what? Venus. अगर negate कर रहा है तो Venus इधर खराब होनी चाहिए. So where will Venus come? बराबर. Venus, let us take hypothetically that the wife is bad, let us say, just for discussion, so just to get a picture in the mind. And as you see, Venus can mean the spouse, okay? So let's not take it as this thing. Let's say the spouse is bad. So spouse, नीच है ना, नीच है तो तकलीफ देगी. नीच में doesn't mean नीच that way. नीच में bad, debilitated. So he or she will trouble the spouse, which is causing the rift. Okay. So Venus इधर नीचे आ गया. Okay. अभी जरा थोड़ा सा इसमें जरा ध्यान दे दो. अगर बीवी तकलीफ दे रही है, ओके, तो मदद को कौन आएगी? मासी आएगी या बेटी आएगी या बहन आएगी. मर्क्यूरी इज एनीथिंग अदर देन वाइफ और दिस थिंग. ओके, दिस इज वन वे यू कैन लुक एट इट. देयर आर टू वेज. सो बेसिकली लाइक सेइंग वीनस एंड केतु, राहु केतु का भी ध्यान में है. टिकटॉक, आई गिव यू अनदर दिस थिंग आल्सो फॉर इट. ओके, अभी ये जरा थोड़ा सा हटके जरा सोचो. ये मीरा है ना, मीरा, मीरा, सीमा, रीटा, ये मीरा. फॉर्चुनेटली मेरे जिंदगी में कोई मीरा नहीं, इसलिए मैं आई टुक दैट एज एग्जांपल. सपोज मीरा इज सम अदर गर्ल. ओके, शी कम्स इनटू द गाइज लाइफ. शी इज गोइंग टू बी द कॉज ऑफ द रिफ्ट ओवर हियर बाय व्हिच वीनस का टक्कर हो जाएगा. आई विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो मीरा इज सम अदर लेडी. शी इज नॉट योर वाइफ. So she has come here, she has taken the top position. So the wife has got niche over here. Are you understanding? Thoda jara dramatic hai, but like it. So one way of looking at it is Mercury is Masi. Okay, so Venus अगर problem दे रहा है तो तुमको मदद करने के लिए मासी आ गई. That is Mercury. या ऐसे देखो कि मीरा तुम्हारी जिंदगी में आई इसलिए Venus को debilitate हो गया, problem आ गई. Whatever you want to look at. I will understood this Mira part, Masi and this thing. So Venus being the spouse in the 12th house to the 7th is anyways debilitated because the spouse is creating the problem. No? Debilitated planet creates the problem, and uska repercussion somewhere hota hai. I don't know. This is the only complicated thing. Everything else is simple. Ye Mira wala thing. Okay. So this is how so if you see in your chart also, Mercury and Rahu are exalted. And Venus and Ketu are debilitated. Okay. अभी कैसे है? अभी देखो गम्मत देखो. इधर ऊपर केतु है. ओके. यहाँ सब गड़बड़ कर दिया शादी का और बीमारी का भी घर है. यानी पूरा सब पाताल बोलते हैं उसको. खड्डे में गया आदमी. फाइनली वो हॉस्पिटल में गया या ही इज ऑन द डेथ बेड. फाइनली कौन उसको बचाने को है? उसकी बीवी पहुंची ना. वो मीरा बीरा गई किधर भाग के. फाइनली द वाइफ केम टू द हेल्प. एंड वाइफ एंड केतु इज द सन. केतु इज द चाइल्ड, बट इन लाल किताब दे कंसिडर मेल चाइल्ड ओनली एज केतु. सो फाइनली द वाइफ एंड द सन ओनली पहुंचे उसको बचाने के लिए.
ये मीरा तो गई खड्डे में, बरोबर. एंड पॉइंट पे द मासी ऑल्सो डिडंट कम. एंड पॉइंट पे दैट मीरा ऑल्सो डिच दैट फेलो. फाइनली कौन, बीवी और बच्चा ही आ गया उसको बचाने को. दैट इज थोड़ा ड्रामेटिक हो गया, बट दैट इज द वे इट विल सेट इन द हेड. सो यहाँ मौज मजाक कर रहे हैं ये मीरा के साथ, तो वीनस को दबा दिया, बरोबर. जब मरने का समय आ गया तो फाइनली बीवी आ गई और मीरा भाग गई. ओके, नो pun intended to any Mira, okay? At least I don't know any Mira, and don't take it in the wrong sense. Okay, ये सैटर्न सन तो पहले का आ गया, ये इधर का आ गया, ये इधर का आ गया, बाकी एवरीथिंग एल्स इज कंप्लीट. ओके, सो बेसिकली इन शॉर्ट द उच्च नीच का, ऑल ऑफ यू आर सीरियस. मैंने कुछ ऐसा ड्रास्टिक नहीं बोला ना, सब लोग ऐसा सीरियस चेहरा देके बोला, आई डोंट मीन एनी हार्म. समथिंग हैज टू बी ड्रामेटिक तो ही दिमाग में रहेगा. इफ एवरीथिंग इज स्मूथ तो कभी दिमाग में नहीं रहेगा. दैट इज माय वे ऑफ लुकिंग एट इट, एंड व्हाट केम टू माय माइंड आई पुट इट. सो अगेन उच्च नीच का देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर व्हाई वी नीड इट. उच्च प्लैनेट विल गिव गुड रिजल्ट, नीच प्लैनेट विल गिव बैड रिजल्ट. Whichever planet it may be, you'll realize in some time that Jupiter also comes niche at some point, if you have seen that thing. Okay, so Jupiter will in the 10th house will come niche na, because you are gold color. So I'll just repeat very fast, just try to imagine it. First house rising sun, so sun is at the top. If sun is on the top, who's sitting Saturn with नीचे. Saturn or Sat? Saturn उसको image, mirror image, 7th house में Saturn, नीचे. sun niche. सेकेंड हाउस में इट इज व्हेन द चाइल्ड हैज जस्ट स्टार्टेड टू Moon. हैव समथिंग, तो फूड के लिए मून बोलो, या सन के बाद में द राइट हैंड ऑफ सन इज द मून, लेटर से, सो मून उधर आ गया. ओके, नथिंग इज नीच बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग ऑफ लाइफ, सो देयर इज नथिंग नीच. उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट 8th हाउस अगर बोला, दैट इज द हाउस ऑफ डेथ. नथिंग कैन गो बियॉन्ड डेथ, सो Is नथिंग इज niche. एक्सॉल्टेड. मून हैज बिकम नीच बिकॉज अभी खाना पीना गया है ना, सब फिनिश, सो मून गया नीचे. थर्ड हाउस basically, like I said, third, sixth, 9th and 12th is that rotated square. सीधा का और टेढ़ा कौन करता है? राहु केतु. So the rhythm is राहु केतु, राहु केतु, केतु राहु, केतु राहु. Ketu Rao. Ketu Rao. So third house राहु केतु, sixth Got house it. राहु केतु, 9th house केतु राहु, and 12th house केतु राहु. Okay. Ketu Rao. Trupti fell out. Okay. Anyway, recording is there, so she'll get it. वो आ गया. Trupti has come back. Now, if you see the fourth house, fourth house is a house of luxuries. The highest form of luxury is gold. So gold is exalted. Jupiter. गोल्ड के पीछे आदमी मरता है, इसलिए मार्स मर गया, debilitated. Okay. Fifth house is the house of children. Opposite. अरे सॉरी, ये अपना तो ये जुपिटर ये हो गया. फोर्थ हाउस जुपिटर है, इसका बराबर मिरर इमेज ऑपोजिट साइड पे मार्स ये हो गया, ये नीचे आ गया. अनदर वे यू कैन लुक एट इट इज 10th हाउस इज हाउस ऑफ ऑक्यूपेशन. काम के पीछे आदमी मरता है, मरता है, मरता है, मरता है. और जुपिटर विच इज किस्मत, उसके ऊपर पैर रख रहा है मेनी टाइम्स. किस्मत इज व्हाट, बीइंग विद योर फैमिली, बीइंग विद योर फ्रेंड्स, वो त्याग करते हैं ना. सो दैट वे यू कैन लुक एट इट, और विच एवर वे यू वांट टू लुक एट इट. Coming to the 5th house and 11th house, like I said, house of children, house of Icha Purti, the best possible houses in the thing. So nothing is good, nothing is bad, everything is nice. छोड़ दो. Coming to the 6th house, 6th house basically is again that tilted square. तो ऊपर राहु केतु का ही है ना, राहु केतु, राहु केतु, केतु राहु, केतु राहु. So इधर राहु केतु आ गया. Okay. Now here it is the 12th house to the 7th house. So the spouse is debilitated. 6th house का बोले ना, 6th house is the 12th to the 7th house. So it is negating the 7th house of marriage. So basically the spouse is causing a problem, so spouse is debilitated. Spouse नीचे खड्डे में गया तो मदद करने को कौन आया? तो मासी आ गई, which is like mother like. So instead of mother, the masi has come to help. So Mercury is masi. Mercury is, like I told you, other than wife and mother, every other masi, bua, sister, daughter, all come, nanand, जो भी है, for a wife it will be nanand, for a guy it will be sali, all come under Mercury. So masi normally will come to your help, let us say. Okay, I don't have a masi, but I presume masi will come to the help. So masi आ गई और वीनस तकलीफ दे रहे तो नीचे आ गई, या मीरा तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो वाइफ को दब गई, वॉट एवर यू वांट टू सी. उसका बरोबर ऑपोजिट उल्टा देखो, उधर इधर मौज मजा किया, मरने का टाइम आ गया तो बीवी और बच्चा ही आ गया उधर.
So BV is Venus, Pacha is Ketu. Okay. और मीरा मर्क्यूरी एंड राहु भागे तो नीच. Coming to seventh house is बराबर opposite of first. So Saturn is uch here, Sun is neech here. Eighth house में if you remember house of death, so basically uch, nothing can go beyond. Moon नीचे गया. Ninth house if you remember ये राहु केतु का बराबर उल्टा हो गया तो केतु राहु आ गया. 10th का if you remember fourth house का उल्टा आ गया तो जिधर जुपिटर और मार्स था इधर मार्स ऊपर गया, जुपिटर नीचे आ गया. 11th हाउस का 5th हाउस का ऑपोजिट यानी उधर ऊपर नीचे कुछ भी नहीं. 12th हाउस में जस्ट नाउ लाइक आई सेड मरते वक्त वीनस और केतु पहुंच गए, मीरा भाग गई. Simple. Now this entire thing I dictated without looking. That this chart is here by the way. So I am looking at you. The chart is here, but I am looking at you and telling you. So ये memorize हो गया. And literally I am telling you, this took me 10 minutes to get that picture in my head. And like I will say on the safer side 1 hour. 1 hour to 1.5 hours. Just do this and ये दिमाग में रह जाएगा. Okay. Now if you are sure of this, let us go to the horizontal thing, which is the पक्का घर and राशि. Okay. अभी यहाँ ये राइट साइड का जो भी है, I change the color so that maybe it will be more conspicuous. Now ये वाला साइड है, I am not getting into it because that we know, which is the राशि. Okay, correct. समझ में आया ना? Right side is the राशि. PQR पक्का घर राशि. बरोबर. So I am not doing the राशि because that we are quite conversant. Now here if you see sun में sun is exalted. तो सन जब राजा है तो राजा के घर में दूसरे को क्यों रखेगा? सो हियर आल्सो सन विल कम. सो द पक्का हाउस, फर्स्ट हाउस इज अगेन सन. Okay. Now here when we come to the second house, basically okay, now one thing you have to understand, this house, this house, this house, this house, and sorry, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ये जो houses है ना, which is like a trapezoid sort of a thing. यहाँ Jupiter is always good. Okay. So second, fifth, so it's almost like a square. Actually, if you go to see it this way, maybe I'll try it in another way. With a line here. These points which are there, second house, fifth house, ninth house, 12th house, and 11th house, is where Jupiter is either Uch or Pakka Ghar. Okay, I'll just explain in a minute. Oops. So here, this is Pakka Ghar of Jupiter. Okay, this is Pakka Ghar of Jupiter. Right, so I'll write a Rashi also same time. So वो ध्यान में आएगा. Jupiter and Sun. बराबर 5th house का Sun आ गया. Jupiter in the 12th house is the Rashi. यहाँ आएगा. हाँ. बाकी सगळीकडे पक्का घर आहे. हाँ, बाकी सगळीकडे पक्का घर. So basically it will come here. Jupiter comes here. Here the Jupiter is both here and here. Because it is the Bhagya Sthan. Jupiter is your Bhagya, Kismat. Okay, so 1, 2, 3, and here again it is Jupiter. So if you want to look at it this way, कि यहाँ से तुम्हारा भाग्य शुरू हो गया second house से. Look at it that way. Okay, here Jupiter is the Karak of growth. Growth is, I don't know how you pronounce it, progeny, your child. Your child is your growth, right? It is growing. Your lineage is growing. So Jupiter will be here.
This is basically the house of Bhagya. So it is Jupiter, Jupiter, Bhagya, Bhagya, Kismat, Kismat. This is the house of Ichha Purti. Jupiter is your Ichha Purti thing. Okay, and this obviously we know because it's a Rashi Lord. So this is how Jupiter gets Pakka Ghar over here. Here if we go, here if we have the thing, here we have got Mars. Manish, can I ask? Yeah. Jupiter in ninth house, हाँ, वो अच्छा राशि भी है और वो भी है. ओके ओके, गॉट इट. राशि ना, and this is the पक्का घर. So उसका ध्यान में रखने के लिए कि it's the किस्मत का घर. Here second house Venus, correct? Here third house Mars. अभी इधर जरा ध्यान दे दो. Third house is the house of efforts, if you remember, willpower, efforts. Okay, यानी मैं मर मर के काम कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ. तो मी मर मर के काम कर रहा हूँ. तो मर्क्यूरी ओवर हियर इज पक्का घर. ओके, सॉरी उल्टा बोला मैं, बराबर वही मैं बोला, कुछ प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ था. जस्ट वन, दिस इज मर्क्यूरी, इसलिए मुझे आई थॉट है कुछ तो मैं उल्टा बोल रहा हूँ. If you look at Mar Mar together, it sounds like Mara Mari. If you just say Mar 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 Mar, no? Mar and Mar, Maro या Maro, समझ में आ रहा है? Mar Mar. So Mar is Mars, Mar is Mercury. So Mars is the पक्का house कि मैं पक्का मारने वाला हूँ, because that is a house of effort, that is a house of willpower. So मैं पक्का मारूंगा, तो पक्का Mars. ओके, और मार मर तो यानी मारो या मरो, लाइक दैट यू कैन से. थोड़ा जरा ड्रामेटिक हो रहा है बट व्हाटएवर. तो मार मर इधर आ गया. ओके, नाउ फोर्थ हाउस, वो मदर के सामने तो कोई जास्ती कुछ बात ही नहीं कर सकता है, तो ये दोनों मदर को ही दे दिया. फोर्थ राशि ऑल्सो मदर और पक्का घर ऑल्सो मदर. मदर के घर में दूसरे किसी का चलेगा नहीं तो दे दिया, चलो बरोबर. ओके, here Jupiter Sun तो we have already put because of Jupiter and Sun. Now here जरा ध्यान दे दो. Basically, if you remember, sixth house, if you remember, I told you earlier on, it dog. Your pet dog is seen from the sixth house. So dog is what? Ketu. तो ये पक्का केतु का घर आ गया. Ketu is dog. Ketu or a dog is seen from the sixth house. Your pet is seen from the sixth house. So Ketu का घर, dog का घर, sixth house. Okay. इधर कौन सा आ गया sixth house में? Mercury. Okay. This video you might have to see couple of times, then वो जरा set हो जाएगा. Now coming to this, अभी इधर ध्यान दे दो. ये तुम्हारा घर है. Seventh house is a house, your spouse, let's say your family. Okay. तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? बीवी रहती है, और बीवी और मदर के सिवा जो भी लेडीज है वो भी रहती है. सो वीनस एंड मर्क्यूरी का पक्का घर है. तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ समान जो भी लोग है वो भी रहते हैं, और तुम्हारी बीवी भी रहती है. सो वीनस एंड मर्क्यूरी कम है. सेवेंथ हाउस का ये कौन है? राशि लॉर्ड वीनस. वी नो दैट, बराबर. ओके, नाउ सैटर्न का है ना, इधर व्हाट केम टू माइंड आई डोंट नो. मासा फिश. ओके, सो व्हाटएवर. तो बेसिकली मासा, एट्थ हाउस, या मासा बोलो या मर गया साला भी बोलो. एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डेथ. मर गया साला, मासा, मार्स, सैटर्न, बरोबर. एट्थ हाउस का इधर कौन है? वापस मर गया ही है. इधर ही जाके मरते हैं ना एट्थ हाउस में. सो मर गया साला पक्का हुआ, इसलिए वो मर गया बोल रहे. ऐसा पकड़ो, पक्का इधर है ना, ये पक्का मर गया साला, इसलिए
we can confirm that पक्का है मर गया. Okay, ये जुपिटर भाग्य स्थान इसलिए इधर आ गया. Now coming to this कर्म स्थान, कर्म Saturn is the कारक of this thing. तो Saturn तो ये एक दिस लाइक एन एक्सिस, यार मून है, यहाँ Saturn है. Okay, coming here Jupiter, like we said, Jupiter is इच्छा पूर्ति, इसलिए that is there. And here again अपना Saturn is the Rashi Lord, 10th house or 11th house, 10, 11. Now coming to this one, इधर केतु अगर बॉस है तो ऑब्वियसली इधर राहु बॉस रहेगा. केतु राहु. Or look at it this way, which came to my mind just now. If you remember, I had said that ये राहु केतु केतु राहु है, तो उसके बीच में क्या एक्सिस कौन सा हो गया, ये आ गया ना, तो यहाँ ही टर्न हो गया केतु राहु. और look at it, I look at it in a different way कि केतु is the house of dog, which is from the 6th house, so केतु उधर आ गया. I'll just run through it again so you'll understand once for all. फर्स्ट हाउस पक्का घर सन का है, सन दूसरे को किसी को बैठने वाले देने वाले ने, तो उसके घर में तो सन आ गया, उसका तख्त है. दिस इज कॉल्ड एज अ तख्त, बादशाह का तख्त. तो बादशाह के तख्त पे और दूसरा कौन बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, तो सन उधर आ गया. मार्स इज अपना फर्स्ट हाउस and that is the power which you go ahead. That's why Mars and Sun together, like Prithiben's Sun is in the first house, that is very good. Sun gives you vitality, gives you strength, everything, and Mars is a house of, Mars is a soldier, right? So Sun is the king sitting with the soldier, cannot be anything better than that. So that way, so Sun Mars idhar aa gaya. Then second house, basically like I told you, second house is Jupiter. Jupiter here, because you can consider Jupiter here because it is your family, it is your wealth. If you remember, second house is the house of wealth, it is the house of family. So Jupiter idhar aa gaya. Venus तो अपने को मालूम है राशि लॉर्ड, सेकंड डिस्ट्रिक्ट. थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ करेज, हाउस ऑफ एफर्ट, हाउस ऑफ विल पावर. तो मैं मारूंगा या मरूंगा, मारूंगा या मरूंगा, तो मर. ओके. फोर्थ हाउस, मम्मी के सामने तो कोई जास्त किसी का चलता नहीं, तो मदर मून. Then coming to the fifth house is the house of progression. It's your child, it is your legacy going ahead, your lineage. So Jupiter is a karak of growth. So पक्का Jupiter आ गया उधर. Sun तो अपने को मालूम है fifth house. Sixth house is the house of your dog, where you see a dog. From dog is Ketu, तो Ketu इधर आ गया. Mercury we know. Okay. ये तुम्हारा पक्का घर है, because this is your family, this is your wife, spouse, everything. तुम्हारा घर है. तो तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं, बीवी रहती है और माँ सामान कोई भी रहती है. सो वीनस मर्क्यूरी, एंड हियर वीनस ऑब्वियसली. हियर मर गया साला, पक्का मर गया साला, तो हमने सबको बोल लिया कि हाँ बाबा मर गया. ये तुम्हारा भाग्य स्थान है, भाग्य किस्मत जुपिटर. ये मीडियन इक्वेटर, मून है तो इधर सैटर्न ही आएगा, एक लाइन आ जाए. ओके. देन यू कम हियर, दिस इज बेसिकली योर भाग्य स्थान, अरे इच्छा पूर्ति स्थान. सो इच्छा पूर्ति, जुपिटर ही इच्छा पूर्ण करेगा तुम्हारा, इज द बेस्ट प्लैनेट. सो जुपिटर, सैटर्न तो वी नो 11th हाउस. हियर केतु इधर है, तो राहु इधर आ गया, पिंग पोंग. दिस कवर्स 4 मेजर टेबल्स which are a big thing. बाकी का thing will be, Masnui will be comparatively easy. Friend enemy will also be easy. This was a complicated thing. Okay, this might cut off in another 5 minutes, but we can log in again. Now you all can ask me anything. Have you all understood this? So what you do is, don't make all this 4 together. See the vertical पहले, सब vertical का by heart कर लो, like how I have said. फिर horizontal का कर लो. Horizontal में सिर्फ left का ही करना है obviously, but वो कर लो. Then what you do is keep a blank chart and उसके ऊपर टिक टॉक ऐसा क्रॉस में करते जाओ सब जगह. Then what I've done is, I don't have it here. Okay, I don't know whether you can see this. ये नंबर दिख रहा है इधर, नंबर्स लिखा मैंने कैसा किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यू नो. सो 1 के बाद में 5 आएगा,
6, 7, 8, 9 आएगा. So basically, you understand what I'm doing? If I keep 4 fingers like this, I've written 1 here, 2 here, 3 here, 4 here, then 5 here, 6 here, 7 here, 8 here, then 9 here, 10 here, 11 here, 12 here. So 1, 5, whatever 9 must be coming. Then 2 I have, 2, 6, 10 might come. You understand? So arbit आ गया. या जैसे भी करना है करो, but don't get it in sequence. And then what you do is, suppose 1 आ गया ना, तो 1 का पूरा भर दो. 1 के बाद में 5 आ गया ना, तो नीचे जाके 5 का भरो. फिर क्या आ गया? Whatever, I don't know, 10 might come. So 10 का भरो. So what happens is you don't have that sequence getting set in your head. नहीं तो अपने को एक sequence head में set हो गया and suddenly googly डाला ना तो मालूम नहीं पड़ता. तो arbit hodgepodge करो and get that thing in your head. And if this story which I've told you, you sort of, just listen to it once or twice and imagine it, that entire picture will come in front of your eyes. Anything you want to ask, this is all I have to say. Actually, we are perfectly within time. Preeti, yeah. So all geniuses use the mnemonic method. The mnemonic method is making up a story around uncorrelated images. Yeah. So तो ध्यान में we are in the presence of a genius. नहीं ऐसा कुछ नहीं. But See. if you just see the We tablet. teach children this. Pardon? We teach children this, how to make mnemonic, how to story कैसे बनाने का. Correct. Story